जिन लोगों को इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ी भी बेसिक जानकारी है, नंबर 1 पॉइंट जो इस कॉन्फ्लिक्ट का है वो ये कि वैली और हिल इनके बीच का एक कॉन्फ्लिक्ट है। Manipur is on the edge again. There's a curfew in Imphal. There is no internet and security forces are patrolling the roads. The state of Manipur has been gripped by violence since May 2023, but things were relatively calm in the last few months. So what has led to this? India's northeastern state of Manipur is seeing a fresh wave of violence. The state is on high alert after 6 women and children, reportedly from the Methi community, were found dead. Protesters took to the streets, vehicles were set on fire, and the homes of several lawmakers were attacked. So, Jai Hind everyone. I, Aditya Verma, welcome you all to the SSB Geopolitical series of our channel Defense Mavericks. And आज हम डिस्कस करेंगे मणिपुर इशू के बारे में, दैट व्हाट एंड ऑल इज हैपनिंग देयर, व्हाई इज द आर्मी पोस्टेड, व्हाई इज AFSPA देयर, ट्राइब्स का क्या रोल है, हमारे कुकी और मीती ट्राइब्स के बीच में क्या टेंशन चल रहा है, क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, एवरीथिंग इन डिटेल। ऑलराइट, तो ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट विल बी सिंपली जहां पे हम करंट इशू को डिस्कस करेंगे, दैट विल गो ऑन फॉर अराउंड 2-3 मिनट्स, एंड देन हम लोग जाएंगे डीपर इनटू द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स कि क्या इसके रीजंस रहे हैं, टू अंडरस्टैंड द मैटर इवन डीपली। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो करंट कॉन्फ्लिक्ट क्या है? अब ये जो स्टेट ऑफ मणिपुर है, इसमें मेनली 2 जो कॉन्फ्लिक्टिंग एथनिक ग्रुप्स हैं वो है हमारे मेतीज और कुकीज एंड नागाज एक तरफ। तो मेतीज जो है वो इस इम्फाल वैली के रीजन में रहते हैं। ये जो आपको बीच में दिख रहा है ना, दिस इज द इम्फाल वैली रीजन। ओके, और कुकीज एंड नागास जो है ये सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड हिल, ये जो ग्रीन से रिप्रेजेंटेड है, दे लिव इन दैट। मेतीज आर बेसिकली हिंदूज जो कि ओबीसी और एससी कैटेगरी में आते हैं, मेनली ओबीसी एंड सम ऑफ देम आर कैटेगराइज्ड एज एससी, व्हेयरएज कुकीज एंड नागास आर मेनली क्रिश्चियंस हु कम इन द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरीज। पॉपुलेशन मेतीज की जो है वो अराउंड 53% है, और कुकीज एंड नागा की इसको पॉपुलेशन है वो अराउंड 30% है। तो वी कैन सी दैट Metis although they live in a smaller area, but उनकी population ज़्यादा है, and Kukis and Nagas though they live in a larger area but वो scattered रहते हैं, that's why their population is less. And क्योंकि Metis का population is more, that's why मणिपुर की जो legislative assembly है, जो state government है, that is mostly Metis dominated. वहाँ पे मतलब Metis votes ज़्यादा है obviously, तो the government जो है उसमें ज़्यादा Metis representation है। Alright. So this is the dynamics, the first thing that we have to keep in mind to understand the conflict की है क्या। अब देखिए, एक छोटी सी चीज समझनी है, ओके, कि जो ट्राइब्स होते हैं, राइट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स स्पेशली, उनके पास एक स्पेशल राइट होता है। एंड व्हाट इज दैट? दैट स्पेशल राइट इज कि आपका जो ट्राइबल एरिया है ना, दैट बिलोंग्स ओनली एंड ओनली टू यू। That means what? कि ये जो Metis यहाँ रह रहे हैं, they cannot go and buy a land in the tribal region, but the tribal people can come and buy a land in the Meti region or the valley region. अब इस चीज के कारण क्या हो रहा था, that these Metis were protesting what? कि हमें भी ST status दे दिया जाए। Why? Because they were saying that जो Kukis and Nagas है, they are coming and they are buying land in our region and occupying space here, जो कि हमारे पास एक बहुत limited space है। You know, the Metis, they live in only around 10 to 15% of all the land in Manipur. Okay, but they cannot do the same. So the limited area that they have, that is also going, and that's why we also want a ST status so that we could be protected, और हमारा ये जो region है ये protected रहे। That was what the Metis were asking, and since the parliament, not the parliament, the legislative assembly of Manipur is dominated by the Metis, so they were going for that. And with, you know, in congruence to that, the High Court of Manipur also said कि हाँ, ये चीज को करना चाहिए। Now this basically sparked the current conflict between the two. Why? Because the Nagas and the Kukis says that no, already Metis are having much representation in the legislative assembly in the state government. अब आप उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस भी दे दोगे तो वट एवर राइट्स वी हैव दैट विल ऑल्सो बी गॉन। ओके, तो ये दोनों
पक्ष का आई एम कीपिंग द पॉइंट्स. ओके, इस चीज को लेके मेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. एंड अल्टीमेटली हाई कोर्ट हैज टू टेक बैक दैट नोटिस, एंड द गवर्नमेंट इज हैज आल्सो टू टेक बैक द step whatever they have to take because the conflict arrived, and the army has to step in and control the things. But still, छोटे मोटे violences and incidents are still going on and it's still not totally under control. तो ये तो था हमारा करंट कॉन्फ्लिक्ट. बट इसके पीछे के डीपर रीजंस क्या है, दैट वी विल अंडरस्टैंड बाय अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नाउ. तो द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया जो था, इट वॉज ऑलवेज वेरी गुड फॉर टी प्लांटेशंस. ऑयल रिसोर्सेज थे वहां पे, फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत थे, एंड इट वॉज वेरी मिनरल रिच. ओके, नेचुरली वेरी रिच जोन. सो व्हेन द ब्रिटिश अराइव्ड देयर, उन्हें ये चीजें पता चली कि अरे ये टी प्लांटेशन के लिए बहुत अच्छा है. देयर मेन बिजनेस वाज टी, राइट. देन ऑयल का जो वहां पे रिसोर्सेज था, दे वांटेड टू मोनोपोलाइज दैट. फॉरेस्ट रिसोर्सेज, मिनरल रिच रिसोर्सेज, एवरीथिंग दे वांट टू एक्सप्लॉइट इट टू द लिमिट. उसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सिस्टम निकाला दैट वाज कॉल्ड एज द इनर लाइन परमिट. नाउ व्हाट इज दिस इनर लाइन परमिट सिस्टम? ठीक है, इनर लाइन परमिट के अकॉर्डिंग इन्होंने एक लाइन बना दी नॉर्थ ईस्ट के पास एंड बोला दैट एनीवन हु इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड ऑफ दिस प्लेस टू इनसाइड, they need to take the permission of the government. Okay, in fact this is continued till now to some of the states. आज के टाइम पे the government says that it is ecologically fragile place and therefore not everyone can go. But उस टाइम पे ब्रिटिश का intentions क्या था? Their intention was to exploit as much as they can without any external disturbance. ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट के, पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए था. बट क्योंकि हम मणिपुर स्पेसिफिक चीजें देख रहे हैं, तो लेट्स लुक अ लिटिल बिट मोर अबाउट मणिपुर, कि मणिपुर में क्या होता है. दिस वाज द स्टेट ऑफ मणिपुर. ओके, और अगेन मणिपुर में जो दो मेन ट्राइब्स थे, दैट वर द मीतीज एंड द कुकीज एंड नागास. अब थोड़ा समझते हैं हिस्टोरिकली भी इनको. मीतीज जो थे वो अगेन उस वैली रीजन में रहते थे एंड दे वर प्रीडोमिनेंटली हिंदूज. ओके, एंड दे कंसिस्टेड ऑफ द रूलिंग क्लास. रूलिंग क्लास मीन्स व्हाट? वहां की जो गवर्नमेंट थी, द किंग्स दैट वर देयर, द मीती किंगडम दैट वाज देयर, मणिपुरी किंगडम, दैट वाज मेनली constituted of the Metis. Whereas the Kukis and Nagas that were there, okay, they were living in the hill and forest region and they were the tribes. अब वहां के लोगों और ट्राइब्स में क्या अंतर था, दैट द वंस हु कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म और वंस हु वर फॉलोइंग हिंदुइज्म, उन्होंने कुछ चीजें जैसे मीट ईटिंग एंड अल्कोहल एटसेट्रा, दीज थिंग्स दे हैव लेफ्ट. ओके, बट ट्राइब्स का सबसे बड़ा क्या होता था, दैट दे स्टिल लिव द नोमैडिक लाइफ. ओके, जो सिविलाइज लाइफ था या जो टाउन लाइफ था, दैट वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, एंड जो ट्राइब्स थे वो क्या करते थे, वो मीट ईटर्स होते थे. राइट. तो नाउ व्हेन द ब्रिटिश केम टू दिस प्लेस, इन्हें रेजिस्टेंस मिला दोनों से, राइट, कि व्हाई आर यू कमिंग टू आवर प्लेस. दे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स. ओके, व्हेन द ब्रिटिश केम, तो इन्होंने क्या देखा कि अब इस चीज को अगर हमें कंट्रोल करना है, तो वी नीड टू मेक दीज पीपल लॉयल टू अस. और लॉयल कैसे बनाएंगे, इसके लिए दे फाउंड अ वे यूजिंग द क्रिश्चियन मिशनरीज. ओके, इन्होंने अपने मिशनरीज भेजने शुरू किए. First of all, what they did? First of all, they sealed the area through the inner line permit that no one else will come. Okay. Then they sent in the missionaries and they said that you start converting the people to our own faith so that they become less rebellious. Okay. They become more familiar to us. Alright. But the missionaries were unable to convert the Metis. क्यों? ये ruling class थी and they already were following a religion. So they, very few of them converted. It's not कि कोई भी नहीं convert हुआ, but very few of them converted. Not all. Most of them remain to their, loyal to their religion. But the Kukis and Nagas, since they were tribes, they were not following any religion as so in a codified manner. तो मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड. उन्हें फूड का, पैसों का, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल का बेट देके, लालच देके, दे स्टार्ट कन्वर्टिंग दीज पीपल इनटू देयर. राइट. एंड दिस इज हाउ दे एस्टैब्लिश देयर ऑटोनॉमी एट दिस प्लेस. यहाँ पे क्या हुआ कि बिकॉज दे कन्वर्टेड सो मेनी पीपल, तो उनका जो रेजिस्टेंस था टुवर्ड्स द ब्रिटिश, दैट गॉट लेस, एंड द ब्रिटिश वर एबल टू एक्सप्लॉइट दिस प्लेस to their will as they wanted. Right. To their will as they wanted. Ab, even when the British were leaving in 1947, they did not want this area to go away from them. Okay. And that's why they left their churches and, people every time. So, still, the West wants to control this area. Although
वर्ल्ड वॉर टू के बाद द डायनेमिक्स चेंज एंड द पावर शिफ्टेड टू यूएसए, तो देन इवन यूएसए स्टार्टेड सीइंग द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एज समथिंग दैट इन विच दे वांट टू कंट्रोल. क्यों? क्योंकि वहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन ज्यादा है, तो दे हैव अ एज एट दैट प्लेस. अब लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई यूएसए वांट्स टू हैव दिस प्लेस. नाउ दिस रीजन दैट इज देयर, यहाँ पे चाइना ऑल्सो वांट टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस एंड यूएसए वांट्स टू एक्सर्ट इट्स इन्फ्लुएंस. क्यों? यूएसए के पास ऑलरेडी साउथ कोरिया और जापान जैसे एलाइज तो है टू काउंटर चाइना फ्रॉम दिस एंड, बट एट द सेम टाइम यूएसए ऑल्सो वांटेड कि ये जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, इस रीजन में हमारा कोई एक स्ट्रॉन्ग एलाई और बेस हो. दे ट्राइड द थिंग इन वियतनाम बट दे लॉस्ट बैडली इन द ईयर 1975, ओके, इन द वियतनाम वॉर. ऑल्दो यहाँ पे सिंगापुर करके एक एलाई है, बट दैट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग. ओके, so USA wanted to have a ally at this place, and that is why they want to carve out a separate nation at this place, right? और अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं the same thing they tried with Bangladesh. Okay, recently, if you see that Bangladesh was asked to give, foreign nation wants air base in Bangladesh to carve out a Christian state. When Sheikh Hasina was out from power, this is the allegation that she made. Okay, that the Bangladesh Prime Minister said, applaud by the foreign nation to establish a Christian state using parts of Bangladesh and Myanmar. She also said she was offered a smooth re-election if she allowed them to build a air base. And foreign powers like US were behind my ouster. This is what Sheikh Hasina said. That is what is being done at this place. They want a center of West that is to be there at this place. और ये कहीं ना कहीं confirm हुआ था when the Mizoram CM went to USA. He said that the Mizo people, okay, Mizo people who are unified through one religion and they are living in 3 different states, India, okay, Bangladesh and Myanmar. So these borders are imposed on them and they want to be unified under one border. Unified under one मतलब क्या? Basically इन तीनों को carve out करके एक separate state बनाओ. As far as we are concerned, we shall never ever accept the division of our people into 3 countries. This will never be acceptable. And the boundaries are imposed boundaries by the British government. In that committee, we are never represented. We are never consulted. Therefore, it is an imposed boundary. We'll never accept it. This has been the agenda for a very long time for these insurgent groups that are there in Northeast. ये insurgent groups क्या हैं? These are separatist groups. Okay, these are separatist groups who want to create a different nation for themselves, जिसे ये कुकी लैंड और जोगम बुलाते हैं, right? And if you have seen that many the Northeast insurgency, which is one of the longest running insurgency, उसके militants क्या कर रहे हैं? वो जो surrender करते हैं, they are there to carve out a different nation, right? They are there to carve out a different nation, but इस इंसर्जेंसी को कैसे कंट्रोल कर लिया जाता है? ये तो एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है, राइट? इस आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट में जैसे ही वो मिलिटेंट्स और ये करने की कोशिश करते हैं, देन कम्स द आर्मी, राइट? देन कम्स द आर्मी एंड इट इज एबल टू कंट्रोल द थिंग, राइट? यूजिंग देयर स्पेशल पावर्स लाइक AFSPA. What is AFSPA? AFSPA stands for Armed Forces Special Powers Act. Okay. अब इस Armed Forces Special Powers Act में क्या होता है? First of all, आर्मी को यूज दिया जाता है, that they can fire at any person, they can arrest any person, they can search, okay, and they can also seize, and all this they can do without any warrant, okay, against any person that they suspect. Power to fire, ठीक है, power to arrest, power to search, conduct searches and seize items, all right? Or any officer who is conducting these things, any officers who is doing these things, okay, AFSPA bars prosecutions or proceedings against that person except when sentenced not. मान लो, let's say that there is an officer X,
okay, who has even fired upon a person. All right. Now, if the center says that इस action के लिए this officer X should be prosecuted or should be taken to a trial, only then the person will be tried. If the center says yes, but if the center does not say so, the officer goes, like without anything. And that is why AFSPA remains such a contested issue in the Northeast, and many people ask for its repeal. Okay, but sometimes it is necessary to gain control or to regain control in a disturbed area. Otherwise, the militants will take over. Alright, तो ऐसे स्पेशल पावर्स कभी देने जरूरी हो जाते हैं. Alright, बट somehow the नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी के अकॉर्डिंग उन्होंने समझ गया कि दिस इज नॉट वर्किंग, द आर्म्ड कन्फ्लिक्ट इज नॉट वर्किंग. तो अब क्या करो? अब द वेस्ट डिड व्हाट? अब द वेस्ट स्टार्टेड पुशिंग मनी. ओके, started pushing money and they started asking the tribal people. क्या बताया था? Tribals have a special status, that the land totally belongs to them, that you go and buy land in the non-tribal places. ठीक है, buy land in non-tribal areas. और ये कैसे कर रहे हैं? How are they pushing money? Through the NGOs, through the missionaries, they are doing that. Okay, that you buy land in these non-tribal areas, okay, so that you can occupy it. Basically a very similar thing happened, during the Israel-Palestine conflict. Israel का formation कब हुआ था? Israel का formation हुआ था 1948 में. Okay, before that there was no region of Israel, it was only the area of Palestine. What the Israeli people or what the Jewish people did, okay, they used to live in Europe, और ये बहुत अमीर हुआ करते थे, they were very rich. So they went and initially 1930 20s 30s में they started buying land in the Arab region, जहाँ पे आज इसराइल है. They started buying huge amounts of land and Arab people were selling them. ठीक है, क्योंकि उन्हें पैसा मिल रहा था, they were selling it. But after the Arabs realized कि अरे Jewish people are coming and they are buying a lot of land at this place, they are occupying a lot of land, their population is increasing day by day, then the Arabs started conflicting कि अरे they started making pressure on UK US कि ये क्या कर रहे हो आप, okay, रुको इन्हें, they should be stopped. Alright, but till the time the Jewish population was already there in Arab land, and then they started asking for their own nation. So this is what the West is trying to do even here. Okay, they want a base. They want a base. Why? Because they want a base to counter China. And that's why they are trying it in Bangladesh, they are trying it in India. और कहीं ना कहीं when India also rejected their offer कि we are not helping you in this, we are not giving you a base here, तो उन्होंने क्या किया? इंडिया के साथ अभी देखा होगा, and India has done a lot of things. India rejected this. India did not support them on their Russia-Ukraine war stand, right? In fact, PM Modi visited Russia. So all of this angered USA very much. Okay, and as a result आप देखेंगे कि पाकिस्तान sponsored attacks have increased on India. राइट, पाकिस्तान जो बहुत टाइम से शांत बैठा हुआ था, सडनली इट इंक्रीज्ड. राइट, नॉर्थ ईस्ट में भी द टेंशंस हैव इंक्रीज्ड. तो व्हेनेवर द टेंशंस आर इंक्रीजिंग, यू अंडरस्टैंड दैट अ फॉरेन एंटिटी इज आल्सो एट वर्क फॉर श्योर. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट्स यूएसए, चाइना इज आल्सो देयर. बेसिकली बोथ आर स्ट्रगलिंग फॉर पावर. ठीक है, यूएसए एंड चाइना बोथ आर स्ट्रगलिंग टू गैदर इन्फ्लुएंस इन अ पर्टिकुलर रीजन. सेम विथ पाक भी है ना. पाकिस्तान भी तो यूएसए और चाइना दोनों पे पल रहा है. समटाइम्स यूएसए इज सपोर्टिंग, समटाइम्स चाइना इज सपोर्टिंग. राइट, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट, यूएसए ऑल्सो हैज अ स्टेक, चाइना ऑल्सो हैज अ स्टेक. और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी पूरी की पूरी इज बैक्ड बाय यूएस एंड चाइना ओनली. ओके, इतने वेपन्स, जो भी मनी दैट इज सप्लाइड, कहाँ से मिल रहा है? इट इज फ्रॉम दैट प्लेस. एंड दैट्स व्हाई दिस समटाइम्स बिकम्स नेसेसरी. ओके, इस पे एक और एलिगेशन ये लगता है कि यूजुअली ऑल दीज वर्क्स बिलोंग टू पुलिस. ओके, सर्च करना, सीज करना, अरेस्ट करना. तो आफ्सपा, जहां पे आर्म्ड फोर्सेस बिलोंग टू द सेंटर एंड पुलिस जो बिलोंग करती है स्टेट को, तो एलिगेशंस लगते हैं दैट इज कि द सेंटर इज ट्राइंग टू टेक ओवर द स्टेट पावर, फेडरलिज्म पे अटैक हो रहा है एंड ऑल. ऑलराइट, बट ये सारी बात की बातें. तो चलो, आई होप दिस हेल्प यू टू गैदर एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मणिपुर इशू इन अ मच मोर डिटेल्ड मैनर, राइट, व्हेन वी सॉ अबाउट द हिस्ट्री. Like this, we'll be coming up with a lot more things. Okay,
and a lot more topics that are there. Okay. So till that time, stay tuned to our channel. We are also going to bring, topics that are dedicated to subjects like geography, polity. वो exam के पहले थोड़ा लाएंगे. Okay, so that will help you in exams, and we will be launching our course also. The second course, first course जो अक्टूबर से चल रहा है, second course will also be launching from December end or January. We are going to launch our courses. All right, that will be for the exams like NDA, CDS, and AFCAT. All right. So that's it from my side, guys. Thank you very much for watching. I hope you all enjoyed the session. Stay tuned. Share this session with everyone else. Subscribe to our channel and keep learning. Jai Hind.